Assalamu alaikum. Can you people hear me? Can you hear me? Yes, sir. Where are the other students? Only 8 students are here. Any idea? No, sir. आप लोगों ने कोई अपना CR बनाया? Anyone can reply to me or Mudassar? Mudassar, are you there? Mudassar, can you hear me? कौन-कौन मुझे सुन रहा है? I can hear, sir. Who else? I can hear you, sir. I can hear you, sir. Okay. Atif Ali? Yes, sir, I can hear. Fatima Ikhlaq? Fatima Ikhlaq? Hafiz Muhammad Aleem? Don't write me the message. Reply to me by your mouth. Najibullah? Yes, sir. Okay. Mudassar? मुदस्सर आवाज आ रही है मेरी? Anybody can tell me कि आपके कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स क्लास में, इस क्लास में? अक्सर रहमान? Yes, sir. नहीं पता कितने सर कि कितने, नहीं पता, ये आइडिया नहीं है मुझे कि कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। 13 मेंशन किया है सर किसी मैं ने ताहिर स्ट्रक्चर सजाद में प्रेजेंट हूँ। ठीक है। ये जो मैसेज लिख रहे हैं ना चैट में, वो मुझे अपने मुंह से रिप्लाई करें, ठीक है?
मुदस्सर आवाज आ रही मेरी? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर। हाँ मुदस्सर, तो आई मीन मैंने जैसे वो ईमेल कर दी थी ना कल कि जी यू आर द ऑफिशियल टीए नाउ फॉर जी दिस सर। कोर्स। ठीक है, तो आपको क्लास में आने की जरूरत नहीं है अभी, बस कीप इन टच दी स्टूडेंट्स। ठीक है, यस सर, आई विल सेंड अ हाँ मेल टू देम। हाँ, इनके साथ जब तक मैं नहीं आता तो आप यू कीप इन टच। ठीक है, तो मैं ओके आपके थ्रू, और इनसे कहें कि ये कोई अपना ना सीआर बना लें। सर। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ, हाँ मैं कर लेता हूँ। हाँ, ताकि वो कम्युनिकेशन में आसानी हो। अब मतलब ये है कि सारे स्टूडेंट क्लास में होते भी नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, कितने हैं क्या है। एनीवे, सो यू डोंट नीड टू स्टे इन द क्लास, यू कैन डू योर वर्क। ठीक है, ओके सर। तो मैं फिर जब मेल किया करूँगा कि क्लास में आ जाओ, फिर तुम आ जाना। ठीक है, ओके सर, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ इन सबका, फिर एक इजी हो जाएगा मैसेज हाँ कन्वे करना। हाँ जी, इस तरह कर लेना। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है फिर, ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह। Okay, I hope all the people can see what I shared now. ठीक है, so the last lecture just was an introduction, kind of introduction, and still it is introduction actually. अभी hardcore जो electrodynamics है उसकी तरफ हम नहीं आए. So in this lecture, I mean, I'm going to have some review of electrostatics. जो बेसिक चीजें जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं गालबन बहुत सारी स्टेजेस पे. ठीक है, so you know already just a minute. Okay, so you people already know what is matter. ठीक है, कि matter जो है वो क्या होता है. So what is matter? Anything having mass and occupying the space. तो उसको हम मैटर कहते हैं. ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट कि जो एक स्ट्रक्चर होता है एटम का, सपोज वी हैव वन प्रोटॉन, ठीक है, एंड वन इलेक्ट्रॉन revolving around. So in this case, if number of protons and number of electrons are equal, तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट कि मैटर जो होता है जिसका कोई मास हो और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको डेफिनेटली हम मैटर कहते हैं. और स्ट्रक्चर जो होता है एटम का, वो भी आपको पता है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन भी होते हैं डेफिनेटली. और जब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हों तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल है. ठीक है, नाउ if there is an atom, okay, and there's electron here, p here, if it loses one electron, so in this case what happens?
atom become positively charged. ठीक है? So if atom become positively charged, then it will be like an ion. ठीक है? If we add another electron, ठीक है? If we add another electron here, तो यहाँ पे क्या होगा? Then negatively charged ion जो आपका फॉर्म हो जाएगा. ठीक है? तो negatively charged ion. ठीक है? These things you already know very well. Last lecture I mentioned that there is a branch which is called quantum electrodynamics, and what we are studying here, that is classical electrodynamics. ठीक है? It's a quantum level, microscopic level. ठीक है? तो जो डिस्टेंस हम इसमें कंसीडर करते हैं चार्जेस के दरमियान, लेट्स सपोज अगर कोई दो चार्जेस हैं, दैट इज माइक्रो लेवल. ठीक है? अब क्लासिकल में जब दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनका डिस्टेंस जो होता है दैट इज नॉट ए माइक्रो लेवल. ठीक है? हम 1 मीटर भी कह सकते हैं, 2 मीटर भी कह सकते हैं. ठीक है? दिस इज अ बेसिक डिफरेंस हियर. So what we are studying here is not quantum ED, is classical ED. ठीक है? डिफरेंस जो एक लेमैन की लैंग्वेज में हम कहें कि अगर कोई दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान अगर जो डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, एटॉमिक लेवल पे है, तो उसको हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिकली जो है ना वो डील करेंगे. और अगर जो डिस्टेंस जो चार्ज पार्टिकल के दरमियान इट्स नॉट ए माइक्रो लेवल, ठीक है, तो उस सूरत में हम इसे क्लासिकली डील करते हैं. दैट इज डिस्टेंस कैन बी 1 मीटर भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, व्हाटएवर. नाउ assume there are two charges. ठीक है? और it's separated by distance r. ठीक है? So charges like this is Q1, this is Q2 and r. Vector quantity. ठीक है? We already know कि Coulomb's law. ठीक है? जो फोर्स है, दो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो चार्जेस के दरमियान है, that we can find out by using the Coulomb's law. ठीक है? And Coulomb's ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसने ये फार्मूला अखज़ किया था. तो फर्स्ट थिंग इन दिस फार्मूला कि आपकी जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द चार्जेस. ठीक है?
and the same force actually is inversely proportional to the square of the charges. Oh, sorry, distance between the square of the distance between the two charges. ठीक है? Very simple form. Actually Coulomb's law को हम gravitational law के साथ भी compare कर सकते हैं, जो कि न्यूटन ने अखज़ किया था. Anyway, so if you combine, so what you get, Q1 Q2 over R square. ठीक है? Force जो है, that is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. ठीक है? So, in case of classical electrodynamics, as I mentioned, this distance we may take 1 meter. ठीक है? Centimeter भी कर सकते हैं, whatever. And then we see the interaction, force of interaction between these two charges. ठीक है? और that two charges, Q1 and Q2, they can be positive or negative. ठीक है? दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है? So, like if you have positive charges here, so what it will do? They will repel each other. If you have negative and negative, they will also repel each other. If you have positive and negative, then they will attract each other. ठीक है? So these charges can be positive or can be negative. So what Coulomb's law is saying, F is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance. So proportionality, to eliminate this proportionality, a constant is introduced. ठीक है? इसे Coulomb's constant कहते हैं. ठीक है? That is denoted with K. और इस K की वैल्यू जो है usually 1/4 by epsilon naught. Epsilon naught, constant for the free space. ठीक है? And overall, I mean, if we calculate this value, what we get, K is equal to 9 into -9 Weber. So equation will be like this. Okay, so this is excuse me, this is Coulomb's law, but this proportionality is removed and introduce a constant. अगर तो हम free space की बात करें फिर तो epsilon naught है. अगर simple हो, that would have some
permittivity. We have it will have some. It depends on the material कि कौन सा material आप use कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर तो if there is a material between the two charges, in case of free space like this, and if there is a material then we use simple epsilon. Depends on the material, what kind of material it is used. Now this is, I wrote in a simple form, but we have to consider the vector form of this Coulomb's equation. We know already, let's suppose if there is any vector you can write like this. ठीक है. Unit vector, ठीक है, can be magnitude form. So we have to convert this equation in the vector form. तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, so what we get here unit vector. ठीक है. So this thing is unit vector. Okay, and this thing is 1/4 pi epsilon naught or simple epsilon. And this thing we know the distance between two charges. ठीक है. So what exactly position vector? Simply it shows the position of any point charge. ठीक है. With reference to some points. ठीक है, कोई किसी पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट लेके उसके मुताबिक ये डायरेक्शन शो करेगा, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे. Now we have vector form of this equation. What we can do here, this is unit vector. ठीक है. And we can write like ठीक है. If we rearrange this one, we get so we can simply substitute this thing here.
So if we substitute here, then the Coulomb's law will be ठीक है. Further rearrange, then you will get like ठीक है. So what we have now here, ठीक है, vector form of equation, ठीक है. Now let's assume that charge in a coordinate system, ठीक है. Let's suppose this is charge 1, this is charge 2, ठीक है. And this one we can say is like this is R1, this is R2, this is origin here, okay, and this one will be like R2 minus R1. ठीक है. So this is we call charge in a coordinate system. If you see from the figure here कि origin से Q1 के दरमियान जो फासला है that is R1 और origin से Q2 के दरमियान जो फासला है that is R2. ठीक है. और फिर इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है that is resultant one, that is simple R, which is equal to R2 minus R1. ठीक है. These things you already you must have studied in the previous electricity dynamic courses and anywhere. So we can rearrange, we can like write R2 is equal to R minus R1, or we can write like R2 minus R. If we write in the magnitude form, that would be सर वो R2 is equal to R plus R1 नहीं होना चाहिए? किस तरह? जो लास्ट इक्वेशन लिखी है उसमें R1 का साइन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए if we move it to the other side of the equation. कौन सा दिस? ये वाला? सर ये R2 is equal to जो लास्ट आपने इक्वेशन लिखी थी ना,
ये वाला ये वाला जी सर. let me see R2 is equal to yes right thank you very much यहाँ प्लस होगा. Okay, so this is how we deal when we consider charge in a coordinate system. ठीक है, इसी चीज को यूज करते हुए हम जो कूलम्स लॉ है उसको देखेंगे जरा. Okay, so what is Coulomb's law? F is equal to 1 over Q1 Q2 ठीक है, this is the last form which we discuss. अब coordinate system जो है वो इसमें introduce कराएं अगर हम that would be modify a bit. अच्छा, मुझे ये ज़रा बताएं आप लोग कि जब ये क्लास शुरू हुई थी तो तकरीबन 16 थे स्टूडेंट, तो according to you people now it's 13. तो कोई मुझे बता सकता है वो 3 ने ड्रॉप कर दिए हैं या क्या सिलसिला है? आपके इल्म में है? क्योंकि डेफिनेटली आप दूसरी क्लासेस भी ले रहे हैं इकट्ठे. एनीवन कैन टेल मी? एनीवन कैन रिप्लाई टू मी और नॉट? No idea, sir. नो आइडिया. किसी को कोई आइडिया नहीं है? मे बी किसी के कोई फेलोज हो, समथिंग लाइक दिस. सर अभी तो नहीं पता कि ड्रॉप किया या नहीं. नहीं, वो ड्रॉप मेरे क्योंकि वो पोर्टल में नहीं आ रहे तो इसका मतलब उन्होंने ड्रॉप कर दिया. So I thought maybe because you people are taking other classes as well, so maybe you people know them as well. अच्छा, अब ये है this force ठीक है. Now you have Coulomb's law in this form. अच्छा, जब R की बात करते हैं then we say it's like x, y, z. So when we only deal with the one dimension, तब हम कहते हैं कि it's only x axis can be, it's only y axis can be, it's only z axis. ठीक है, तो this is the Coulomb's law. ठीक है, if we consider the charges in a coordinate system. ठीक है, and if we replace like R1 with X1, R2 with the X2, ठीक है, then the last equation will show one dimension. ठीक है, ये x axis की तरह भी हो सकते हैं, y axis की तरह, z axis की तरह भी हो सकते हैं. So we can modify the last equation like ठीक है. So this is 1D case when we only consider the x-axis. We can also, I mean, like y-axis and z-axis, something like this.
But now if we have n number of charges, ठीक है, dimension एक ही है, लेकिन number of charges यहाँ पे सिर्फ 2 charges हम consider कर रहे हैं. यहाँ पे हम 2 charges consider कर रहे हैं, that is Q1 and Q2. So if we have like n charges, ठीक है, so what would be the equation? ठीक है, यही जो यही जो कूलम्स लॉ है उसकी क्या फॉर्म होगी, ठीक है. So for n number of charges, let's draw the diagram first. Okay, so that could be like ठीक है. So suppose charge, first charge, second, third and fourth. Okay, so Q, Q1, Q2, Q3, Qn. ठीक है. So that would be like here x1. Sorry, here was only x. This is x, x2, x3. ठीक है. And so on, xi, something like this. So we have to modify the last equation according to that one. We have force, ठीक है. We have this constant. We introduce a summation sign. Charges. So here charge, I wrote it n. The number of charges are n, but this I call it ith charge. ठीक है. Number of charges are n up to n, but this is ith charge. ठीक है. So you have this equation now. So what it shows, the force on n number of charges. ठीक है. The interaction actually. इसमें you can see here कि हमने सिर्फ x यूज किया है. It means it's सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहे हैं. ठीक है. इसको हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं. ठीक है. हाँ जी. सर जब एन चार्जेस हमारे पास है तो हम जब भी कूलेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा 2 चार्जेस के दरमियान ही होगी ना. हाँ जी. But this is because of the one charge interaction on the other n charges. Okay. Okay. Now we are still dealing with the Coulomb's force. ठीक है. और we started from basic Coulomb's law. We move towards if the charges are in coordinate, and we modify the equation a bit according to that one, and then we move toward the one-dimensional case. We replace the r with x,
and we see the change in equation, and after that we consider n number of charges. ठीक है, तो n number of charges when we consider, then the equation is modified, we introduce the summation sign. ठीक है, क्योंकि सम अप कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वी कैन रिप्लेस दिस सम साइन विद साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन भी समेशन ही होती है. ठीक है, ओके, सो नाउ वी मूव फर्दर, बट बिफोर टू मूव फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क कि कुछ स्टूडेंट उस दिन कह रहे थे कि वो क्लास में लेक्चर लेते हैं. इज इट स्टिल सेम और व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? आप क्लास में लेक्चर लेते हैं कि इंडिविजुअली ले रहे हैं? सर मैं तो इंडिविजुअली ले रहा हूँ. वो कौन थे? कुछ 5-6 स्टूडेंट थे, वो उस दिन कह रहे थे कि वो क्लास में ले रहे हैं, वो क्लास से लिया करेंगे. नहीं सर, अब इंडिविजुअली ले रहे हैं, वो फर्स्ट लेक्चर सिर्फ एक साथ लिया था. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक. ओके, सो आप में कोई पीएचडी स्टूडेंट भी है इस वक्त? जी सर, मैं यस सर. हाउ मेनी? आई थिंक 2. किनके साथ है? मैं भी हूँ सर. क्या नाम है आपका? काजी मुआज. आप किनके साथ हैं? क्या मतलब सर? मतलब एडवाइजर आपके कौन है? हाँ, डॉक्टर रिजवान है सर. अच्छा अच्छा, और आपके अलावा और कौन है? सर मैं अक्षर सर रहमान, ये मेरे डॉक्टर रफी के साथ. अच्छा अच्छा, रिसेंटली ज्वाइन किया आपने? जी. Anyone else? Only 2 PhD students are here. सर वो इबादुर रहमान भी है सर इसमें. उनके माइक के इशू है, वो मेरे अच्छा साथ इधर ही बैठे. अच्छा अच्छा, वो किसके साथ कर रहा है? वो भी डॉक्टर रिजवान के स्टूडेंट है. अच्छा, ठीक है. माइक माइक बंद कर लें जरा, नॉइज बहुत आ रही. ओके, सो नाउ if there is one charge, ठीक है, let's suppose there is one charge और एक और चार्ज भी है जिसे हम Q नॉट कह देते हैं. एक दूसरे के पास हैं दोनों चार्जेस. ठीक है, so there will be a force on this charge because of this charge. ठीक है, इस चार्ज पे उस चार्ज की वजह से फोर्स है. ठीक है, कैन से कि Q नॉट पे एक फोर्स एक्ट कर रही है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस Q. ठीक है, अब इस फोर्स को ये जो फोर्स है दूसरे चार्ज पे इफेक्ट कर रही है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपको पता होगा पहले ही. इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ठीक है, इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, these are your electric field lines. ठीक है, इसका मतलब है कि हर चार्ज की कोई फील्ड लाइंस हैं. ठीक है, वो नेगेटिव हो या
पॉजिटिव हो। पॉजिटिव केस में आउटवर्ड है और नेगेटिव केस में इनवर्ड्स। ठीक है, तो एक चार्ज पड़ा हुआ है स्पेस में, क्यू नॉट कहते हैं। ठीक है, एंड उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्सर्ट हो रही है दूसरे चार्ज की वजह से। ठीक है, इट मीन्स वी कैन आल्सो राइट लाइक ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर, जो फोर्स उस चार्ज पे एक्सर्ट हो रही है, जो लग रही है, दैट इज, क्योंकि दूसरे चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब इस फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, so that is force per unit charge. ठीक है, now move further. Actually electric field is what? Electric field is a region around a charge. ठीक है, जहां पे उसके number of lines outward or inward, it depends on the charge. And उस field के अंदर, within that field actually exert a force on other charge. ठीक है, if we write like ये एक चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, so it will be like this. एक चार्ज की फोर्स जो है, एक चार्ज की फील्ड जो है दूसरे चार्ज पे अफेक्ट करती है। ठीक है, एक चार्ज की फील्ड दूसरे चार्ज पे अफेक्ट करती है। ठीक है, दैट इज से इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट क्यू नॉट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज फोर्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नाउ वी नो ऑलरेडी कि एक इक्वेशन हमने लिखी थी पहले, दैट F is equal to 4 pi epsilon naught, that is for n particles, n charge particles or n number of charges. ठीक है, so how about this charge here? If we can modify a bit here, इसको हम ऐसा करते हैं कि बाहर ले आते हैं। ठीक है, okay, so now you have qi over x minus x. ठीक है, अब इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मजीद बाहर ले आते हैं। So you bring it out here, तो इसको हम ओवर क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, and rest of the equation will be like
Okay, so what is this value now? This is F over Q, is electric field. ठीक है, so इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, so this is your electric field. ठीक है, from here इसको हमने बाहर ले आए हैं दिस चार्ज को. ठीक है, we write in this form and then you have electric field. ठीक है, and the rest of the thing is for the one dimension. We are considering for the one dimension. तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. So we started from the Coulomb's law. ठीक है, जब भी चार्जेस होंगे उनकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स उनकी जो अप्लाई होती है. एंड whenever we study the Coulomb's law, first we study the forces between the charges, then we move towards the electric field. क्योंकि जो भी चार्ज है उसकी कोई ना कोई फील्ड जो है वो होती है. ठीक है, just a minute. How is weather in Pakistan in these days? पाकिस्तान में कैसा मौसम है आजकल, तो बताएगा. जी सर ठीक है मौसम, बारिश हुई है कल भी बारिश हुई. अच्छा अच्छा, आज भी मौसम ठंडा ही है. ठीक है, ओके. अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं तो या डेफिनेटली यू मस्ट हैव स्टडीड इन बीएस और समथिंग लाइक दिस. तो हम इसके साथ साथ कुछ चीजें हाउ टू अप्लाई डिफरेंट प्लेसेस, जैसे आप कह रहे हैं कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड similarly surface charge distribution. ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी स्टडी whenever we study the electric field. और ये tell you, I mean, how to apply the different kind of charge if you have a surface charge distribution, if you have a linear charge distribution, और अगर कोई वॉल्यूम फॉर्म में है, अगर आपकी लाइन फॉर्म में कोई चार्जेस हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी सरफेस पे हैं तो कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. एंड व्हेन यू हैव लाइक इन अ वॉल्यूम फॉर्म तो आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे. These are the application you can say. Basic to deal basically. ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. और ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं साथ. तो इफ़ यू गो टू योर टीम्स तो आप उस पर दोबारा इसको चला के भी देख सकते हैं. ठीक है, और
मेरा ख्याल डाउनलोड करने की भी ऑप्शन है, ठीक है। तो जो मैं लिखता हूँ वो आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई विल कंक्लूड हियर टुडेज लेक्चर, ठीक है। स्लोली मैं ज़रा चल रहा हूँ अभी, ठीक है, ताकि आप भी गेट थोड़े से यूज टू हो जाएं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था कि कोई अपना CR जो है ना वो बना लें, वो मुदस्सर से मिल लें, तो कोई मसला मसाइल हो तो उससे आप डिस्कस कर भी सकते हैं, ठीक है। वो आई मीन ही इज़ कीपिंग इन टच विद मी डेफिनेटली, तो उससे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और जैसे उसने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप कोई बना लेगा, समथिंग लाइक दिस, लेकिन आप अपना CR एक बना लें जो आपका रिप्रेजेंट कर सके सारे स्टूडेंट को। आई थिंक आपके 3 क्लासेस तो हो गई हैं गालबन, 3 या 2 ही हुई हैं अभी गालबन, ताकि कम्युनिकेट करने में जो है ना वो ज़रा आसानी हो, ठीक है। बाकी आप ईमेल करके मुझसे अगर कोई है मसला या व्हाटएवर यू कैन, मेरे साथ कम्युनिकेशन जो है वो आपकी हो सकती है ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो आई विल कंक्लूड हियर एंड साइन ऑफ। तो इसको फर्दर जो है वो आप जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई स्टूडेंट अगर ड्रॉप किया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। वैसे ड्रॉप तो किया 3 या 4 ने गालबन किया ड्रॉप, लेकिन उन्होंने क्या सोच के ड्रॉप किया आई डोंट नो, बिकॉज इट्स अ कोर कोर्स, और ये कोर कोर्स है और आपको लेना तो पड़ना ही है, अब लें या बाद में लें, ठीक है। और हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है, क्योंकि मैं थ्योरेटिशियन नहीं हूँ, इसलिए मेरा स्टाइल ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। बट एनीवे, अगर ड्रॉप किया है तो इट्स अप टू देम, लेकिन ये है कि ये कोर कोर्स है, इसको लेना तो है ही, और सूनर और लेटर इसको दोबारा जो है वो तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ आज। तो आप दसर के साथ कीप इन टच, ट्राई टू बी, क्योंकि आपको वो अपडेट जो है वो करता रहेगा फिर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।